Hello IIT JEE aspirants, how are you guys doing? I welcome you to this mathematics session. As you guys already know that you have embarked upon a journey called IIT JEE, and many of you have started feeling the heat of IIT JEE. As the lecture advances, you are getting exposed to so many concepts, so many ideas, so many theorems, so many laws. It's really difficult to assimilate all those ideas altogether. You are facing the heat, and if you're really feeling if you're finding it really difficult, then I must remind you that IIT JEE examination is not an ordinary examination. It is one of the most difficult exam, not only for your country, but it is considered to be one of the most difficult exam across the globe. And it is not my opinion. What I am saying is the opinion of many eminent professors, academicians across the globe. When they look into the syllabus of IIT JEE, they say the syllabus is huge, the complexity level of the syllabus is high, and when they look into the question paper, especially for IIT JEE Advanced, they really get confused that can we expect class 12 students who have just passed out from a high school to deal with such complexity? They expect these type of complexity can only be handled by undergraduate students. So just imagine the difficulty level and the the extraordinary exam you're going after. And when you are going after an extraordinary thing, you need to have an extraordinary effort, because if you want to achieve something extraordinary, you have to put something extraordinary. And that is why if you are really facing problems assimilating it, that's a good news. Why I'm telling you that's a good news? Because the journey of IIT JEE is not going to be a bed of roses. It is going to be full of twists and turns. The slope would be very steeper. At times there would be complexity in daily aspect that it would be difficult for you to go ahead with that. But at the same time, you're looking for an extraordinary exam, you're looking for an extraordinary result. So this is what is required, this is what is needed. At the same time, to achieve greatness, to achieve amazing result in this amazing journey, you need to understand that you need to have a little bit of stress. If you are facing zero stress, you are on a wrong direction. If you are finding no problem, either you are an Einstein or you are going totally drastically wrong somewhere. And if you are totally stressed out, then also it's a very bad thing, because if you are totally stressed out, then you won't be able to perform. You would be bogged down, you would remain demotivated. So somehow this optimal stress should be required, so that keeps you motivated, that keeps you on a track, that makes you put energy and effort to achieve the ends for which you have started this long marathon, for which you have started this long journey. As we advances, we are already 2 months old now in the IIT JEE 2022 course. And in those 2 months, we have covered quite a lot in our syllabus. We finished in mathematics. If I talk about mathematics, we have finished trigonometric identities. We have finished basic maths, in which we have done equations and inequations. We dealt with higher degree polynomial. We dealt with wavy curve. We dealt with irrational equations and inequations. We dealt with transcendental equations and inequations, which I mean logarithmic and exponential. We dealt with various basic graphs. We learned many terms related to the graphs and functions. And then we also covered trigonometric equations and inequation and their types. So if you look, we have covered quite a lot. And if you know that we have to assimilate quite a lot. As I was having an interaction with you a few days ago, where I was trying to listen to your problems, where I came to know that you guys are getting stuck somewhere. Like some are facing problem in inequality, some are facing problem in
problem solving of trigonometric identity. Some are facing problem in understanding some concepts. For that, you don't have to be really get worked out, and you don't have to be really worried about it, because we have various avenues where those things can be handled. At the same time, those things will remain there, because that's the part of the game. You cannot achieve 100% clarity, 100% acquisition of all the content. They are the complexity and the length and the breadth of the content is so huge that it's not humanly possible to extract uh, all the information, all the analysis in a very short span of time. So what I can suggest you is that you have to be a little patient. At the same time, keep getting exposed to the things. As I have told you that you have four mathematics mentors. Apart from your personal mentors, you have subject mentors, and you have four mathematics mentors. One is me myself. The second one is Mr. Pramod Sharma. Third one is Mr. Amarjeet sir. Fourth one is Mr. Aditya sir. So you have got four amazing teachers with whom you can call anytime, and wherever you are getting stuck. Let's say you're getting stuck in mod equality and inequality. Let's say you're getting stuck in understanding CBS inequality. You're getting stuck in solving some problems. So you can immediately contact your mentors. Apart from that, we'll be having a continuous online Zoom or Google Meet classes where you have to come up with doubt. So when we are arranging a doubt class, this week I am planning to arrange a doubt class where I'll be taking your doubts, especially students who have asked they are feeling stuck in inequalities, they are feeling stuck in logarithm, they are feeling stuck in mod, they are feeling stuck in wavy curve, they are feeling stuck in trigonometric problem solving. So don't get worried. You just compile those doubts and do come with all the problems with complete preparation. We'll be solving your problems. I'll be coming in the session and I'll be taking your doubts one by one. So it would be better if you arrange the doubts properly, so that all the students can ask the problems and listen to the problems and can benefit out of it. Now, the idea of this video, which I am starting right now, called Additional Problem Solving, which is Target IIT JEE Mains and Advanced 2020 to 2022. Now, this is called Additional Problem Solving Episode 1. So, basically, I am going to have a series of additional problem solving. As I am already telling you that IIT JEE exam has two aspects. One, the syllabus. The second, the problem solving. As we advances in syllabus, we are getting hang of what exactly the content of IIT JEE is, what are the content of theory we are covering, what are the types of problems we are thinking. Somehow we need to put more effort in enhancing our problem solving skills if we really want to get into IITs and NITs, if we really want to excel in IIT JEE Mains and Advanced. For that, we are starting this series called Additional Problem Solving, in which we'll be covering problem solving only. We'll be bringing questions and we'll be solving them. The difficulty level of the problem is going to be from moderate to advanced level. So you would be benefited if you really watch these lectures carefully and make proper notes. One thing I want to reiterate, and I want to again tell you that the regular lectures which you are attending, the regular lectures which are numbered as lecture 1, lecture 2, which we have finished lecture 17, and the next lecture would be lecture number 18. I need you to have a proper note making of that. When I say you have to thoroughly finish those lectures, when I say a lecture is thoroughly finished, I can only define it is thoroughly finished if the following points are fulfilled. If one of the following points are not fulfilled, we will not expect that lecture has been thoroughly watched. So first thing, the first checklist is you have to watch the content of the lecture completely. That's the first checklist. The second checklist, that you have to solve all the problems and derive all the results which we have talked in that lecture. Second checklist. Third checklist, you need to have your own note of the lecture, and you have to make your own personal lecture note in your own language. If these three things are not fulfilled, we will not assume that you have finished the lecture.
Second thing, if you won't be doing that, you would be caught, because we are taking continuously exams, and if your performances are not improving, it means you are not on the right track, you are not engaging with the content, you are not engaging with the assignments, you are not engaging with the note making. So be very careful, because your marks are being recorded, and as the time passes, I'll be looking into each and everyone's performance. So it's a high time now, you have to get into that. And this is additional problem solving, and today in episode 1 we are going to cover basic math, in which we'll be taking mostly the questions from log equations. So whatever the questions we have picked of a moderate to higher difficulty level. So there is many learning point which you need to make notes. At the same time, uh, you have to remember that when you are making notes, you have to keep you don't have to make subject notes, you have to make topic wise notes. When you are attending the lecture of basic math, you should have a notebook of basic math. When you are attending the lecture of trigonometry, you should have a notebook of trigonometry, where you write down the lecture number and the ideas you have discussed. And then you have to leave many blank pages, where you have to keep on adding all the learning points which you are building. How would you be adding the learning points? The second one is that if you are doing additional problem solving, you can add there whatever learning you have done. If you are writing some assignments, and if you learned few things, you can write it down there, mentioning the assignments. If you are attending some test, and during the test you learned something, after the analysis you have to go to your topic wise notebook, and you have to fill in that, okay, these are my learning points. So this is how we are going to succeed, because this exam is extraordinary, and extraordinary is calling for an extraordinary effort. So be very very clear that if you want to reap the fruits of this exam, you have to be really 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 into the game. Okay, and being into the game doesn't mean the path would be easy, the path would be difficult. If you are facing problems, if you are facing difficulty in assimilating the content, that's a good news. If you are getting troubled with the topics, or getting troubled with the understanding the concepts, it's a good thing, it's an indicator that you are on a right track, because the concepts, the laws, the theorems, the result, they are not easy laws, they are of high complexity, their ideas of really up to the higher part of understanding, a higher part of IQ. So don't get bogged down if you are not able to uh, understand everything, because that's a part of the game, that's a part of the natural process. Okay, let's get started. Let's see what's the first question. See, the first question says a to the power log bx, base को मैंने black से कर रखा है, तो log x with the base b का whole square. So तो bracket के अंदर क्या है, a to the power log base bx minus 5 in again the bracket x to the power log ba plus 6 is equal to 0. Now this question looks a little tricky, because you see on the first term has base a and the second term has base x, but both the thing, the power is in log base b, and the power log the quantity which log you are finding out has been interchanged by the base. सो अगर आपको इस तरीके की चीज देखती है, तो एक बहुत ही अमेजिंग सा आइडेंटिटी होता है. लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडेंटिटीज. You have to know this identity which I am mentioning. A to the power log base bx equals x to the power log ba. This is a identity which you need to remember. How can you prove this identity? Let's see the proof. If I say a to the power log base bx is, let's say, a quantity t. Okay, so if I take log both side with base b, let's say, so taking log base b of a to the power log bx upon log base bt. So as you know, the identity that log b a to the power m is m log ba. This identity I am sure you know. So what you can do is you can take the power out. So this will become log base bx into log base ba is equal to log base bt. Right? This is the left hand side. Now working on the right hand side, let's say
What is right hand side? X to the power log base ba, and let's call it as y. And if I take log base b on both sides, what I will get? Log base ba log base bx is equal to log by. If you look into these two equations, this green one and this blue one, you will see on the right hand side you see log bt, and in the right hand side you say log by. But you see left hand side is exactly same, which means log base bt equals log base by. What does it imply? It implies t equals y. So yes, I can say this identity is true. So I just prove why this identity is true. If you know the identity, you don't have to prove it, you can directly apply it. So you have to remember this identity, that a to the power log bx equals x to the power log ba. Now coming back to the problem, if you see the first problem, it is a to the power log bx square minus 5 into x to the power log base ba plus 6. So my idea is I need to get this base and this base same. So that is the whole idea. So what I am going to do is I am going to write this as a to the power log base bx only, and this is like whole square minus 5 x to the power log base ba को मैं क्या लिख दूंगा? a to the power log base bx. इसे लिख दूंगा a to the power log base bx plus 6 equals 0, right? Now I got something like this is like the same quantity, this is also same quantity. What I can do is I can replace it, I can substitute it. Let's say I call it y equals a to the power log base bx. So I can do this substitution and I can write y square minus 5y plus 6 equals 0. If I factorize it, it is going to be y minus 2 into y minus 3. That is going to be 0, which means y equals 2 or y is equal to 3. So this 2 could be my solution of this quadratic equation. Now, but I know the question is not y, the question is in x. So we need to find x. So what we are going to do, I am going to replace y by a to the power log base bx equals 2. Let me solve this first, then we will solve a to the power. अब देखो क्या करेंगे, a to the power log base bx को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ? x to the power log base ba is equal to 2, right? तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? आपको पता है अगर x to the power n 2 है तो x क्या होगा? 2 to the power 1 by n. ये आइडेंटिटी बचपन में आप पढ़ते हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको लिख सकते हो x to the power x is equal to 2 to the power 1 by log base ba. आपको पता है 1 अपॉन log base ba क्या होता है? log base ab. इंटरचेंज कर जाता है बेस और जिसका आप log निकालते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 to the power log base ab. सो एक सॉल्यूशन आपका क्या आ गया? एक सॉल्यूशन आपका आ गया x is equal to 2 to the power log base ab. बेस इज a, और सिमिलरली अगर y is equal to 3 था तो आप इसको क्या लिख सकते थे? x to the power log base ba equals 3. तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 3 to the power log base a b. So these two are going to be the solution. The answer is going to be 2 to the power log base ab or 3 to the power log base ab. Base है ये, always remember that. Okay. So this is how you can solve it. So the learning point is that you should know this identity. Once you know this identity, that everything was simple mathematical sense. Now coming to the next question, you have x to the power 3 log base 10x का cube minus 2 by 3 log base 10x equals 10 square into 10 to the power 1 by 3. Now if you see, this is the base here और उस पे पावर लगा है which is log x. log base 10x को आप log x भी कह सकते हो. तो आप इस पूरी कहानी को ऐसे भी लिख सकते हो, x to the power 3 log x
का क्यूब माइनस 2/3 log x equals 10 to the power 7/3. 2 plus 1/3 is 7 by 10 to the power 7/3. Now, so you see on the power you have log x, then you have x. So what you can do is just for not writing too much, you can write log x can be replaced by let's call it t. So you can write x to the power 3t cube minus 2/3t equals 10 to the power 7/3. Now if I take log base 10 on both sides, so I can take log of x to the power 3t cube minus 2/3t equals log 10 to the power 7/3. Since you know, आपको ये आइडेंटिटी पता है, log base a b to the power m is m log base ab, राइट? तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए लिख सकते हैं 3t क्यूब माइनस 2/3t इंटू log x, और log base 10 का 10 to the power 7/3 क्या हो जाएगा? 7/3. So now this is in t and this is in x, but there's a good news that log x is itself can be written as t. So what you can do is 3t cube minus 2/3t into t equals 7/3. So what you can do is 3t to the power 4 minus 2/3t square is equal to 7/3, which you can write it as 9t to the power 4 minus 2t square minus 7 equals 0. Now this is the equation you got. This is the equation in 4 degree, but the good point is one is in t square, the other one is t to the power 4. So what I can do is I can replace t square with y. I can replace t square with y. So this equation will become 9y square minus 2y minus 7 equals 0. So now I have to deal with this equation. Let me take this equation to the next page. So taking this equation to the next page, what I can solve, I can simply apply the quadratic formula you have been studying in class 10. So y could be equal to minus b, that is 2, plus minus b square is 4, minus minus plus 4 into 7 into 9 upon 18, right? Which makes it 2 plus minus 4 sevens are 28, 28 times are 252, that is going to be 256 by 18, which makes it 2 plus minus 16 by 18, that makes it 1 or minus 14 by 18. So y is going to be 1 or y is going to be minus 14 by 18. Now our question was never in y, it was in x, so y को resubstitute क्या करेंगे? y is t square. So what I am going to write is t square equals 1 or t square is equal to minus 14 by 18. Since this cannot be true because the square of a positive number, square has to be a positive number, so आप इसको लिख सकते हो no solution, और यहाँ को आप क्या लिख सकते हो? t is equal to plus minus 1. Now again the question was not in t, the question was in x, so t can be replaced back as log x is equal to 1 or log x is equal to minus 1. Since you know log x is whenever there is not base is written, whenever there is no base is written and the equation is in log form, so you can assume that the base is 10. That is what the definition says. So this x could be equal to 10 to the power 1 or x could be equal to 10 to the power minus 1. So the answer is going to be 10 or 1 by 10, right? So this was an easy problem, just you need to have the right eye that what needs to be substituted and what need to be resubstituted. Now coming to the third question, let's see what the question is. You have log base 2 4 to the power x into 4 plus 4 into log base 2 4 to the power x plus 1 is equal to log 1 by root 2 base, and we have to find 1 by root 8 ka log. Now as you can see, the right hand side can easily be solved. Let me solve the right hand side first. Right hand side solve कर लेते हैं. तो आपको पता है log base 1 by root 2 right hand side
sorry, log base 1 by root 2, 1 by root 8. तो मैं इसका कॉमन बेस ले लेता हूं, लेट्स से log 2. So log 2 1 by root 8 अपॉन log base 2 1 by root 2. तो आपको पता है कि 8 is 2 cube, रूट आ गया है तो 3 by 2 और डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस 3 by 2. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 3 by 2 और 2 1 by root 2. तो 2 का क्या कहते हैं, रूट 2 कब होता है, जब हाफ ले लेते हो और जब क्या कहते हैं रेसिप्रोकल में आ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस हाफ. तो क्या हो गया फाइनली, सो यू गॉट 3. So your right hand side is 3. Your right hand side is 3. That's very clear. Now if you look into the left hand side, you see here 4 to the power x plus 1 and you see here 4 to the power x into 4 plus 4. So let me rewrite it. So I can take 4 common. So this becomes 4 to the power x plus 1 and this remain log base 2 4 to the power x plus 1. Right? Now if you see log of a product is sum of a log, तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log base 2 4 plus log base 2 4 to the power x plus 1. So the bracket is easily simplified into this remains log base 2 4 to the power x plus 1 equals 3. So this is my new equation now. This is my new equation where I have to work. Now since you have seen log base 2 4 to the power x plus 1, that can easily be replaced with a variable. So what I am going to do is I am going to replace log base 2 4 to the power x plus 1 can be replaced as, let's say, y. So I have replaced this, I have done this substitution. So what will this equation will look like? Log base 2 4 is going to be look like 2 plus y into y is equal to 3. So this has transformed into a quadratic equation. So if I write it well, it is going to be y square plus 2y minus 3 equals 0. So now I have to solve this equation, y square plus 2y minus 3 equals 0. Let me solve you for this. Y square plus 2y minus 3 equals 0, right? This is the equation. Okay, so I can say the y is going to be minus 2 plus minus b square is 4 minus minus plus, that is 12 by 2, which is going to be minus 2 plus minus root 16 by 2, which is going to be minus 2 plus minus 4 by 2, which is going to be minus 2 plus 4 by 2 or minus 2 minus 4 by 2, which makes it 1 or minus 3. 1 or minus 3. So you have two values of y because it was a quadratic. Now y is nothing, y is not your question is x. So basically y can be resubstituted back. And what is y? Y is log base 2 4 to the power x plus 1. I am sure this is, yeah, this was the substitution. Now I can write it as 1 or log base 2 4 to the power x plus 1 equals minus 3. So what I can do is I can write 4 to the power x plus 1 equals 2 to the power 1, or I can write 4 to the power x plus 1 equals 2 to the power minus 3. Now if I write 4 to the power x, this becomes 1. So x becomes 0, one solution. Or if I write this is like 1 by 8 minus 1. The 4 to the power x is minus 7 by 8. So what should be the value of x for which 4 to the power exponent is going to be negative? So you're going to say no solution. And the only solution you have is x to the power 0 and it goes fine with that. So the answer is going to be x is equal to 0. Okay. Let's go to the next problem. Log base 10 of log x. So I don't have to say base 10 base. When I say log, it means the base is 10. So log of log x plus log of 4 log x minus 3. So what you need to know that whatever
the output of the box inside the bracket that needs to be positive, then only you can find the log, right? Similarly, you see log here, so whatever you see inside, that also need to be strictly positive, then only you would be able to solve. So this is what you have to keep in mind while solving, because when you get emotional while solving, you will use put substitution, resubstitution, you forget that what's the domain of the problem, right? So the domain strictly says that whatever is inside here, that needs to be positive, whatever this inside here, the output of this bracket thing should be positive. We should not abuse that. So let's get into how to solve this. Again, I'll take there's lot many logs are there, so I can write log x as y. So what you can do is left hand side can be written as log of y, this has been y, plus log of 4y minus 3. I'm not writing the base because that's 10, so in base 10 I have a liberty not to write the base. Now log y plus log 4y minus 3. Now that is like the sum of logs. Sum of logs can be converted as log of product. So this is going to be y into 4y minus 3 equals 0. Now log of something is going to be 0, so it means whatever the bracket is, it is basically 1. So what you can do is y into 4y minus 3 equals 1. So you can do 4y square minus 3y minus 1 equals 0, which means y is 3 plus minus 9 plus 16 by 8, which means y is going to be 3 plus minus 5 by 8, which means y is going to be 1 or minus 1 by 4. So you on one end you are saying y has to be 1, and the other end you are saying or minus 1 by 4. So when you say log x is 1, because y is nothing but 1 log x, and you say log x is minus 1 by 4, the problem arises, because when you say log x is 1, when you say log x is 1, right, this is like y is log x, so you solve it log y plus log 4y minus 3. So you say y equals 1, or you say 3 minus 5 is minus 2 minus 1 by 4. So you say log x is 1 and you say log x is minus 1 by 4. यहाँ से मैं करूँगा तो ये हो जाएगा x is equal to 10, और यहाँ से मैं solve करूँगा तो ये हो जाएगा x is equal to 10 to the power minus 1 by 4. Now the question is, are these two are the part of the answer? So if I look into this, log base 10 log x is 1, so x is 10, right? Y equals 1, yes, y is log x is 1. Log base 10 into log x, the original question, I am putting the log original question, plus log base 10 into 4 log x minus 3 equals 0. This is your original equation. Now if I say log x is 1, so this becomes log 1, this becomes log 4 minus 3, that is 1. So this goes fine, this goes fine, no problem here. Now look here, if I say log base 10 into log 10 to the power minus 1 by 4 plus log 4 into log 10 to the power minus 1 by 4 minus 3, ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log base 10 of minus 1 by 4, which is no solution, which is not true, which is totally wrong. And if I look here, this will become 1 minus 1 minus 3, which becomes log of negative, again which is not true. So आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो है आपका, ये पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये डोमेन में लाई नहीं करता, ये डोमेन को अब्यूज करता है, ये आपके डोमेन के साथ सिंक इन करता है. तो सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू. अक्सर हम जब इस टाइप के सवाल करते हैं तो हम बह जाते हैं भावनाओं में और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5, let's see what the question is. This is basically one property which I have asked you to find as. So this is like a standard property. What you see is you see a base of n to the power y, and then you see the on the thing for which you have to find the log, that is m to the power x. So what you can do is log base n to the power y of mx, ये आपको निकालना है. तो मैं कॉमन बेस क्या ले सकता हूं? मैं कॉमन बेस ले लेता हूं n. तो मैंने n ले लिया, तो ये हो गया m टू द पावर x. ये क्या हो गया? log बेस n टू द पावर y. सो ये बड़ा आराम से रिड्यूस हो गया, x बाहर चला जाएगा, तो एक ये बन जाएगा x log n m, और ये क्या हो जाएगा? इसका y बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? log n n. सो अगेन log n n is going to be 1, so it is going to be x by y log base n m. So this is the property which you need to keep in mind. So it's just a property which I have asked you to prove. Coming to the sixth problem, you see यहाँ पे है log base 2 of 3, log of 3 with base 2, log of 4 with base 3, log of 5 with base 4, log up to log of n plus 1 with base n equals 10. If you look here, this is 2, 3, 4, ends at n, begins at 2, ends at n. तो बताइए कितने टर्म्स होंगे टोटल? n या n minus 1? n minus 1. टोटल टर्म्स कितने हैं? n minus 1. ये टोटल n minus 1 टर्म्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए. तो वो n की वैल्यू आपको निकालनी है. इस प्रॉब्लम को तो हैंडल करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं इसको कॉमन बेस 10 लेके क्या लिख सकता हूं? log 3 by log 2, राइट? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं log 4 by log 2, सॉरी log 3. इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं log 5 by log 4, और इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं log n plus 1 by log n. अब देखो गौर से, ये log 3 इस log 3 को कट कर देगा, ये log 4 इस log 4 को कट देगा, ऐसे ही log 5 इधर log कट करेगा, और यहाँ पे log n होगा जो इसको कट कर देगा. तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास ये बचेगा, और क्या बचेगा? ये बचेगा. तो सिर्फ बचा क्या? log n plus 1 अपॉन log 2 इक्वल्स 10. अगेन अब मैं क्या कहते हैं, वापस log बेस 2 ले सकता हूं, तो log बेस 2 n plus 1 इक्वल्स 10. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं n plus 1 इक्वल्स 2 की पावर 10. तो मैं क्या लिख सकता हूं? n is 2 की पावर 10 minus 1. That is going to be your answer. 2 की पावर 10 is a very common number, that is 1024 minus 1, that is 1023. Okay, so this is how you can easily solve this problem. Okay, let's see, it's also a very easy problem. 1 upon log base 3 2 plus 2 upon log base 9 4 minus 3 upon log base 27 8. तो आपको log of 2, log of 4 और log of 8 निकालना है. बेस है 3 9 27. तो कहीं ना कहीं मुझे बेस कॉमन करना पड़ेगा. तो 3 9 27 प्यारा सा नंबर है, तो मैं सबका बेस 3 बना सकता हूँ. क्या कर सकता हूँ? सबका बेस 3 बना सकता हूँ. तो जो पहला टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log बेस 3 2. इसको मैंने अनटच छोड़ दिया. सेकेंड टर्म को देखिए, प्लस 2 अपॉन, डिनोमिनेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ log बेस 3 4 is 2 square अपॉन log बेस 3 9 is 3 square माइनस 3 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 3 8 is 2 cube अपॉन log बेस 3 that is 3 cube 27 is 3 cube. सो ये क्या हो गया? ये बन गया, ये एज इट इज अनटच छोड़ दिया था मैंने, log बेस 3 2 प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर का 2 इधर आ जाएगा, 2 log बेस 3 2 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 3 log बेस 3 2 अपॉन 3. अब देखिए क्या हो रहा है, ये और ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा, ये और ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा.
So what you got? You got 1 upon log base 32 plus 2 upon log base 32 minus 3 upon log base 32. तो आपको पता है इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 बाई लॉग बेस 32 आ जाएगा. 3 बाई लॉग बेस 32 minus 3 by log base 32 would be equivalent to 0. So this is going to be answer. So you will always get, whenever you are writing mains or advanced, you always get some easy problems. You just need to have the idea of holding your emotion and solving the right questions. Okay. Now going to the next problem, question number 8. Now you have like x, y, z, three positive numbers. They have given x, y, z equals 10 to the power 81. Then they have given log x into log yz plus log y into log z equal 468. सारा का base 10 है, that is why I am not mentioning it. You have to evaluate under root log x square plus log y square plus log z square. So this question becomes कि आपके पास दो इक्वेशंस हैं और तीसरा का वैल्यू निकालना है. एक इक्वेशन लॉग में दे रखा है, दूसरा इक्वेशन नॉर्मल एक्सपोनेंट में दे रखा है और तीसरा जो आपको निकालना है वो लॉग के फॉर्म में दे रखा है. तो कहीं ना कहीं मुझे जो पहला एक्सपोनेंट है उसको लॉग बनाना होगा. तो मैं x y z इज इक्वल टू 10 टू द पावर 81 को मैं log बेस 10 कॉमन लेके लिख सकता हूँ log x y z इक्वल्स 81 है ना. मैंने बेस 10 ले लिया तो 81 आ गया. अब log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ log, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log y plus log z is equal to 81. It's very tiring to write every time log, so you can just substitute it with log x as a, log y as b, log z as c. So a plus b plus c is 81. That's the first equation. If you look here, this is a, this is log y. So log yz can be written as log y plus log z. Log y is b, log z is c, that is equivalent to 468. Now you can write it as log y is nothing but b. So a into b plus c, log z is c plus bc equals 468, which means ab plus bc plus ca equals 468. So this is the second equation. What you need to find? You have to find under root of a square plus b square plus c square is what? Right? That is log x square plus log y square plus log z square. तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इज इट रिंगिंग? सम आइडेंटिटी इज रिंगिंग द बेल. आई एम श्योर आपका आइडेंटिटी रिंग कर रहा होगा. व्हाट इज द आइडेंटिटी? आई एम श्योर आप सबको याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी. इफ यू रिमेंबर राइट. अगर नहीं याद आता है अगर ऐसी आइडेंटिटीज तो मतलब बहुत गलत चल रहा है. एंड व्हाट इज a plus b plus c? A plus b plus c is 81 from first equation. So 81 square. I don't know what is a square plus b square plus c square. That is exactly I need to find. 2 into I know what is ab plus bc plus ca. That is 468. So I'm going to write it as 468. So now I'll just rearrange my equation. I'll write a square plus b square plus c square is 81 square minus 936, which is 6561 minus 936, which is 25, and then this is 65 minus 9 is 56. That is 5625. That is 75 square. So a square plus b square plus c square equals 75 square. So under root of a square plus b square plus c square would be equal to under root of 75 square, which is 75 answer. Right? So the value is going to be 75. Question number 9. Again, it's an easy problem. 2 to the power log. देखने में थोड़ा सा डरावना सा है. 2 to the power square root of log 3 base 2 equals 3 to the power square root of log 2 base 3. है ना. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में कि आखिर हुआ क्या. इसको प्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. मैं लॉग ले लेता हूँ. क्या कर लेता हूँ? बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ. और बेस क्या लूंगा लॉग का? 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ. लेट्स टेक 2. सो टेकिंग
log base 2 both sides. Since both sides are exponents, so they are going to be positive, so I can safely take the log. So I'm going to say log base 2 to the power root log base 2 3 equals log base 2 3 to the power log base 3 2. Since you know power goes out, so power क्या आ गया 2 log base 2 3 into log base 2 2, यहाँ क्या आ गया log base 3 2 into log base 2 3. राइट हैंड साइड पे काम कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा रूट log base 3 2 into log base 2 3. तो इसको फिर से इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया log base 3 2. इसका चेंज इन बेस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा log base 3 2. सो सेम चीज का स्क्वायर रूट ऊपर है, नीचे ये है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ log base 3 2. लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अंडर रूट log base 2 3. इसका बेस अगर मैं अंडर रूट का इसका इसका ये बेस चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log base 3 2 which is equal to right hand side. So hence it is proved. Easy one. Question number 10, you have to find log of 12, log of 3, log of 4, log of 3 with the bases. Log of 12 का बेस 3 है, log of 3 का बेस 36 है, log of बेस का 4, log of 4 का बेस 3 है और log of 3 का बेस 108 है. So again जब so many logs are there, so we need to have a common log, common base. तो since 3 प्यारा सा नंबर दिख रहा है क्योंकि हर इसका फैक्टर 3 है और सबसे सिंपल नंबर है, सो विल ट्राई टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन log base 3. तो पहले इस पे काम कर देते हैं. log base 3 12, log base 3 12 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं log base 3 3 into 2 स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं log base 3 3 प्लस log base 3 2 स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 plus 2 log base 3 2. So this is the numerator of first fraction. सेकेंड है क्या है log base 36 3. अब इसका बेस मैं 3 ले लूं तो log base 3 3 upon log base 3 36 is 2 square into 3 square, that is 36. न्यूमरेटर में हो गया 1, ये हो गया log base 3 2 square plus log base 3 3 square, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 upon 2 log base 3 2 plus 2, right? So the first fraction is something like 1 plus 2 log base 3 2 upon 2 log base 3 2 plus 2. This is your first fraction. Let's preserve it. Second fraction log base 3 4. Log base red से कर देता हूँ second fraction यहाँ पे so that it's easy to recognize. So log base 3 4 can be written as 2 log base 3 2. So I've converted everything in log 3 2, and log 108 3 can be written as log base 3 3 upon log base 308, which makes it 1 upon log base 3 cube into 2 square. So log base 108 3 has been reduced as 1 upon log base 3 cube into 2 square, which can be written as 1 upon 3 plus 2 log base 3 2. तो आपका जो पहला फ्रैक्शन है वो है just to we don't have to write to every time log base 3 2. I'm just writing log base 3 2 as a. So my first fraction is 1 plus 2a upon 2a plus 2, right, minus the numerator of the second fraction is 2 log base 3 2, so that can be written as 2a, and this can be written as sorry
The numerator is okay. Log 36 3 has been, so this is not going to be the fraction. Okay, let me redo it. We did little mistake. Let's redo it. यहाँ पे गलती हुई है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो. इसका ये डिनोमिनेटर है और इसका ये न्यूमरेटर है. सो अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा log 3 12 इज सिंपली एज 1 प्लस 2a. मैं log बेस 32 को a ले रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 2a अपॉन 1 बाई 2a प्लस 2, which is going to be 1 plus 2a into 2a plus 2. So this is your first fraction. So first fraction is 2a plus 1 into 2a plus 2, where a is log base 2. Now going to the second fraction, log base 3 4 can be written as 2 log base 3 2, which is 2a. So my second fraction का numerator क्या है? This log 108 3 is 1 upon log base 3 cube into 2 square, which is going to be 1 upon 3 plus 2a, which I can write the second fraction as 2a upon 1 upon 3 plus 2a, which makes it 2a into 3 plus 2a. So the final is first fraction minus second fraction, that is 2a plus 1 into 2a plus 2 minus 2a into 3 plus 2a. इसको वर्कआउट करते हैं, ये क्या बन जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2a प्लस 2, ये बन गया माइनस 6a माइनस 4a स्क्वायर. इसमें क्या हुआ? 4a square and 4a square got cancelled. 4a, that you just left with 2. So this is going to be your answer, right? So we just missed out because जो हमारा denominator था वो already 1 upon में आया था, तो वो actually में वो numerator में चला जाता. That was a mistake. That is why we had to correct it. Now coming to question number 11th. Now if you look, if x equals 4 upon square root of 5 plus 1 into 4th root of 5 plus 1 into 8th root of 5 plus 1 into 16th root of 5 plus 1, then you have to find the value of x plus 1 to the power 48. Now this is the problem. Now what if you look into x, that looks a little complicated, right? Or it's too much on the denominator. So let's take it simply. पहले मैं 4 upon root 5 plus 1 को देखता हूँ, ठीक है? रेस्ट एज इट इज को मैं कचरा ले देता हूँ, ठीक है? सो कचरा स्टेज हियर. ना इसको मैं क्या करूंगा? रेशनलाइज करूंगा. सो इसको लिख सकता हूँ रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1. तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 5 माइनस 1 इंटू कचरा. सो देखिए क्या बन गया, ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या? रूट 5 माइनस 1 अपॉन कचरा. कचरा को फिर से वापस ले आते हैं. रूट 5 माइनस 1, कचरा क्या है? कचरा 3 टर्म्स थे जो लास्ट के. 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1, बाकी को लिख दो कूड़ा, ठीक है? कूड़ा बाद में, कूड़ा क्या है? ये दोनों कूड़ा हैं जो बच गए. अब क्या है? रूट 5 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर हाफ माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू कूड़ा. इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर हाफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू कूड़ा. अब व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये क्या बन जाएगा? 5 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 1 बाई 4 माइनस 1 अपॉन 5 to the power 1 by 4 plus 1 into कूड़ा. So this and this gets cancelled. You are left with 5 to the power 1 by 4 minus 1 by कूड़ा. आइए अब कूड़ा लिख लेते हैं. कूड़ा क्या है? 5 to the power 1 by 4 minus 1 upon
8th root, that is 5 to the power 1 by 8 plus 1 into 5 to the power 1 by 16 plus 1. Now this is like small, I can write it. तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ so that I can go to the next page. I just copied. I am just going to the next page. अब मैं क्या करूंगा इसको, आप आई थिंक आप लोग गेस कर चुके हो. इसको मैं लिखूंगा 5 to the power 1 by 8 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 to the power 1 by 8 प्लस 1 इंटू 5 to the power 1 by 16 प्लस 1. वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 to the power 1 by 8 plus 1 into 5 to the power 1 by 8 minus 1 upon 5 to the power 1 by 8 plus 1 into 5 to the power 1 by 16 plus 1. So ये और ये cancel. So you are left with this. आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 to the power 1 by 16 का स्क्वायर minus 1 upon 5 to the power 1 by 16 plus 1. ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 5 to the power 1 by 16 plus 1 into 5 to the power 1 by 16 minus 1 upon 5 to the power 1 by 16 plus 1. So this is going to be your x, right? इतना कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई हुआ. So x is going to be 5 to the power 1 by 16 minus 1. जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x plus 1 equals 5 to the power 1 by 16. आपको क्या निकालना है, x plus 1 to the power 48. ये क्या हो गया, 5 to the power 1 by 16 to the power 48. क्या हो गया, 5 to the power 3, that is 125. That is your answer. Okay. Now coming to the next problem, you see you have a cube root of 7 plus 5 root 2 plus 7 minus 5 root 2 का क्यूब रूट. अब दो क्यूब रूट है. अगर आपको याद होगा हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में ये सवाल कर चुका है. फिगर डिफरेंट रहा होगा. देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 7 plus 5 root 2 plus 7 minus 5 root 2. Let's say this is equal to p. So I can write plus minus p equals 0. Now what I can see is this is one term whose cube root is given, this is another term whose cube root is given, and the third term is minus p. If I consider this as a, this as b, and this as c, so what I have figured out that a plus b plus c equals 0. If a plus b plus c is equal to 0, so we already know what is a cube plus b cube plus c cube. That is equivalent to 3abc. Now if I try to cube it, I will try to apply this identity. So a cube will become 7 plus 5 root 2. B cube will become 7 minus 5 root 2. And c cube will become minus p ka cube, which is equivalent to 3 into ab. A is 7 plus 5 root 2 ka cube root into 7 minus 5 b is the cube root into minus p, right? This is what we have established. Now if you focus here, this and this cancels out, so you got 14 minus p cube, and you know the cube root stays, but inside something like 7 plus 5 root 2 into 7 minus 5 root 2, that makes it 49 minus 50 ka cube root upon minus p. So if you focus here, 14 minus p cube, that will become minus 1 ka cube root is minus 1, so that will become 3p, right? So if I take everything right, p plus 3p minus 14 equals 0. Now if you do little bit of hit and trial, you can guess the answer, because let's say this is 7 minus 5 root 2. So what is 5 root 2? 5 root 2 is some like 7 se kuch thoda sa zyada, so it's like it's going to be a very small number. And if you look here, 7 plus 5 root 2, what is 5 root 2? 5 root 2 is going to be something like 1.4 into 5, that is 7, so somewhere 15 something, right? So यहाँ पे आपको क्यूब रूट 15 का आ रहा है और वहां पे ये है, तो कहीं ना कहीं गैस करने के लिए मैं 2 गैस कर सकता हूँ, है ना? तो आप देख सकते हो 2 क्यूब प्लस 2 into 3 minus 14 is
right? So what is it? Sorting out. So p minus 2 is one of the solution by hit and trial. So what we can do is p minus 2 into p cube plus 3p minus 14. So I'll just write is p square. So it will become p cube minus 2p square. 0 से गया तो ये हो गया 2p square. This becomes 3p. This becomes minus 14. I'll just write 2p. This becomes 2p square minus 4p. So this becomes 7p minus 14. So this becomes 7. So this gets cancelled. So you got p minus 2 into p square plus 2p plus 7 equals 0. Now if you look here of this expression, discriminant is 2 square minus 4 into 7, which is negative. So no real roots. No real roots. So the only roots is p minus 2 equals 0, which makes it p equals 2. So this is your answer. राइट सो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको घबराना नहीं है. यू नो द पैटर्न, हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज में भी ये प्रॉब्लम किया था. Now coming to the 13th problem. 13th problem बहुत ही आसान है अगर आप गौर से देखेंगे. दिस इज x स्क्वायर एंड दिस इज 7 टू द पावर log. आपको पता है a टू द पावर log a m क्या होता है? m होता है, राइट? ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई x स्क्वायर प्लस 7 to the power log base 10, that is x minus 2. So what you can do is, now you can start solving. So you can say x square plus x minus 2 equals 0. Now you will try to solve minus 1 plus minus b square 1 plus 8 by 2, that makes it minus 1 plus minus 3 by 2. तो क्या बन गया? 2 by 2 और माइनस 4 बाई 2. सो 1 और माइनस 2. यहाँ पे आप गलती कर देंगे. गलती क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉग एक्स. तो मतलब क्या है? एक्स हैज टू बी पॉजिटिव. सो ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट. ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट. तो ये सारी गलतियां होती हैं लॉग की इक्वेशंस में, जो आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से. ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी है. लेट्स कम टू द 14th प्रॉब्लम. X plus 1 to the power log x plus 1 equals 100 into x plus 1. What I can do is I can take log I can take log x base 10 है इसलिए मेंशन नहीं किया गया है, तो I can take log base 10 both side. तो क्या बन जाएगा? log x plus 1 into log x plus 1 equals log 100 plus log x plus 1. Now log x plus 1 को मैं क्या लिखूंगा? log x plus 1 को मैं y मान लूंगा. तो क्या बन गया? क्या बन गया? y स्क्वायर. दिस इज y into y, that is y square. This is 2 and this is y. So what you got? y square minus y minus 2 equals 0. y क्या हो गया? 1 plus minus b square 1 plus 8 by 2, that makes it 1 plus minus 3 by 2. So y क्या हो गया? 4 by 2 और minus 2 by 2. So y हो गया 2 और minus 1. तो मतलब y का आपका सब्सटीट्यूशन था log x plus 1, तो log x plus 1 क्या हो गया? log x plus 1 हो गया 2 और log x plus 1 क्या हो गया? minus 1, राइट? तो x plus 1 क्या हो गया? 10 स्क्वायर और 10 to the power minus 1. तो x plus 1 क्या हो गया? 100 और x plus 1 क्या हो गया? 1 by 10. तो x plus 1 100 हुआ तो क्या हुआ? x हो गया 99, या यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया? 1 by 10 minus 9 by 10. यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्सेप्टेबल होगा. क्यों एक्सेप्टेबल होगा बताइए? क्योंकि x log x plus 1 है जिसका आप log निकाल रहे हैं, तो x plus 1 नेगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो x plus 1 अभी आपका नेगेटिव नहीं है, क्योंकि x plus 1 या तो आपका क्या आया है? 100 आया है या 1 by 10 आया है, which is very much in the domain. So this is going to be your answer. log base x minus 1 4 plus
1 प्लस लॉग बेस 2x माइनस 1। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा फिर से कि एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बेस दोनों का चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है, तो वापस इसको ये कर देते हैं, तो log बेस 2 4 कर देते हैं, log बेस 2x माइनस 1 कर देते हैं, 1 प्लस log बेस 2x माइनस 1 कर दिया। और फिर क्या किया हमने, उसके बाद ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया y से। किससे रिप्लेस कर दिया, y से। ऊपर क्या आया, ये तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या बन गया, 2 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स 0। वाई क्या हो गया, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 8/2। क्या बन गया, -1 प्लस माइनस 3/2। तो एक बन गया 2/2 और एक बन गया -4/2। तो 1 और -2 अभी होल्ड करना है, क्योंकि log बेस 2x, ब्लैक ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, log बेस 2x माइनस 1 is either equal to 1 or equal to -1. So x minus 1 is 2 to the power 1 और x minus 1 is 2 to the power -2. So x minus 1, तो x क्या हो गया, x हो गया 3 और यहाँ क्या हुआ, x हो गया 1 plus 2 to the power -2, that is 5/4. So this is going to be your answer, which is like very much a part of domain, so you don't have to worry about it. Okay, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या है, 5 to the power 1 plus log base 4x into 5 to the power log base 1/4x minus 1 equals 26/5। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे log बेस 1/4x है, यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से आप ऐसे लिख सकते हो 5 to the power 5 into 5 log बेस 4x, और इसको आप लिख सकते हो 5 to the power log 4x अपॉन log 4 1/4 अपॉन 5, -1 का पावर इधर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 26/5। तो आपने कुछ नहीं किया, कुछ कमाल नहीं किया है, आपने बस आराम से चीज़ों को लिख दी है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 5 टू द पावर लॉग बेस 4x प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर माइनस लॉग बेस 4x इज इक्वल टू 26/5। जिसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 टू द पावर लॉग बेस 4x प्लस 1/5 इंटू 1/5 टू द पावर लॉग बेस 4x इज इक्वल टू 26/5। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 5 टू द पावर लॉग बेस 4x को y। आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या बन गया, 5y प्लस 1 अपॉन 5y equals 26/5. Okay, so if I cross it, I can multiply with 5y, this will become 25y square, this will become 1 and this will become 26y. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 25 स्क्वायर माइनस 25y माइनस वाई प्लस 1, इसमें 25y कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, y माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लूँ तो y माइनस 1। तो इससे क्या आया, इससे आया y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/25। सो y क्या है मेरा, 5 टू द पावर log बेस 4x इज इक्वल टू 1 और 5 to the power log base 4x equals to 5 to the power -2. So 1/25 can be written as log 5 to the power -2. The log base 4x can be written as 1 is nothing but 5 to the power 0, so it will be 0. And this log base 4x would be -2. So x would be 4 to the power 0. X would be 4 to the power -2. So x would be 1 or x would be 1/16. So this is going to be your solution. Okay, so this is like not a very difficult problem. आइए 17 प्रॉब्लम देखते हैं। log base 5 to the power 1/x plus 125, यहाँ पे log base 5 है, ये दोनों अकेला है। सिंस चीज़ों को सबको अगर समेटना है तो दोनों तरफ मुझे सेम log चाहिए, तो इसको तो ठीक है, ये लिख दिया log 5 to the power 1/x plus 125, नॉट एन इश्यू, इसको मैं एज इट इज छोड़ दिया।
इसको मैं लिख सकता हूँ log base 5 6 एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ log base 5 5, और इसको लिख सकता हूँ log base 5 5 to the power 1 by 2x, राइट। तो मैंने सबका log ले लिया। अब देखो क्या बन गया, ये बन गया log base 5 5 to the power 1 by x plus 1 by 25, ये बन गया log base 5, सब सम है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 5 टू द पावर 1 by 2x। अब मैं दोनों साइड log रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि दोनों तरफ सेम log है, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 by x प्लस 125 इज इक्वल टू 30 इंटू 5 टू द पावर 1 by 2x। 5 टू द पावर 1 by x को मैं y मान सकता हूँ, तो मैं y मान लेता हूँ। तो ये y प्लस 125, ये क्या बन गया, ये बन गया 30y स्क्वायर, बिकॉज 5 टू द पावर, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट अ सेक। यू हैव 5 टू द पावर 1 by 2x एज y, और इसको स्क्वायर करोगे तो आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 by x। तो ये क्या बन गया, ये बन गया y स्क्वायर, ये बन गया 125 और ये बन गया 30y। आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 5y प्लस 125, स्प्लिटिंग द मिडिल आसान है इसलिए कर दिया। y माइनस 25 माइनस 5y माइनस 25, सो क्या हो गया, y इक्वल्स 5 और y इक्वल्स 25, एंड व्हाट इज y is 5 to the power 1 by 2x. So 5 to the power 1 by 2x is 5 to the power 1, or 5 to the power 1 by 2x is 5 square. So 1 by 2x is equal to 1, or 1 by 2x is equal to 2. So 1 by 2x is equal to 1, or 1 by 2x is equal to 2. So x is equal to half, or x is equal to 1 by 4. So one solution is half, the other solution is 1 by 4. So two solution. Yeah, आराम से question. It's an easy problem. There's nothing. Just need to solve. You just need to, don't get irritated when solving it, right? Let's solve this problem. Log of 2xy, since base is not mentioned, so we'll assume the base is 10. Log 2xy is equals log x into log y. Log yz equals log y into log z. Log 2zx is equal to log zy. Log 2zx is equal to log z into log x. So just to get things moving and we don't have to write so much of log, तो पहले पहला इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ log 2 plus log x plus log y is equal to log x into log y. तो इसको मैं log x को लिख सकता हूँ ab, so 2 plus a plus b is equal to ab. मैंने log x को a assume किया, log y को b और log z को c. Log y into z is log y plus log z. Log y plus log z is equal to log y into log z into log z. So y plus z is b plus c, and y into z is bc. So this is my second equation. Third one is log 2 plus log z plus log x is equal to log z into log x. तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 plus log z is c plus a is equal to ac. So this is my third equation. तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूं, फर्स्ट इक्वेशन है 2 plus a plus b is equal to ab. सेकेंड है b plus c is equal to bc, and third is log base 2, sorry this is log base 2, this log base 2, log 2, and this is log 2 plus c plus a equals ac, right? Now if I subtract equation 1 and equation 3, so log 2 will cancel out log 2, a will cancel out a, so you will left b minus c, ab into b minus c. So b minus c is equal to ab into b minus c. आप दोनों को एक तरफ ले जाओगे तो b minus c, sorry,
So a will cancel out a, you will left with b minus c, and this will be a into b minus c. So if I take common, so you'll get b minus c into 1 minus a equals 0, right? So you have two solution, one is b is equal to c और a is equal to 1. अगर a is equal to 1 है, a is equal to 1 है, तो if I look into equation 1, equation 1 क्या है? log 2 plus a plus b is equal to ab. अगर a is equal to 1 हो जाता है तो क्या होगा? log 2 plus 1 plus b is equal to b, which is not possible. क्या हो गया? Not possible. So what we can do? We can reject. What we have to reject? We have to reject a is equal to 1 because it is not fitting in equation 1. So a is equal to 1 has been rejected. What you are left? You are left with b equals c. When b equals c, what happens? Log 2 plus a plus b. So finding b and c, I'll just use this equation, second equation. So b equals c means b plus b is equal to b into b. मैंने c को रिप्लेस कर दिया b से in equation 2. So what I got is 2b equals b square, which means b square minus 2b equals 0, which means b into b minus 2. So b की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 2. Just a sec. है ना? तो दो वैल्यू आ गई है, एक आ गई है b इज इक्वल टू 0 और एक आ गई है b इज इक्वल टू 2. अगर b इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियसली c भी 0 होगा या c भी 2 होगा. नाउ अब a क्या हो सकता है? आपको पता है, किसी भी दो इक्वेशन में डाल दो. तो पहला इक्वेशन क्या है? log 2 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू ए बी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स a इज माइनस log 2. एक तो ये आ गया. यहाँ से आप डालोगे log 2 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू ए बी. तो log 2 a क्या है? a निकालना है. b क्या है? 2. ये क्या है? 2a. सो a इक्वल्स 2 प्लस log 2. तो a की आपके पास ये तीन कंडीशंस आ गई, राइट? एक्स वाई जी निकालनी है पहले केस के हिसाब से. आपको पता है x क्या है? x है log a है log x इज माइनस log 2. log y है 0, log z है 0. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे. इसको आप लिख सकते हो log 2 to the power minus 1, है ना? पावर चला जाएगा. तो x क्या हो गया? x हो गया हाफ. y क्या हो गया? y हो गया 1. z क्या हो गया? z हो गया 1. तो एक सॉल्यूशन ये हो गया. आइए यहाँ से रेड पे कर देते हैं. यहाँ पे देखिए क्या है? log x इज इक्वल टू 2 प्लस log 2. अगर आप गौर से देखें तो ये हो गया log x log 100 प्लस log 2. तो log x क्या हो गया? log 200. तो x क्या हो गया? 200. इसमें x की वैल्यू आ गई 200. सेम वे log y क्या है? 2. तो y क्या हो गया? 100. log z क्या है? c, दैट इज 2. तो z क्या हो गया? 100. तो आपके दो आंसर हैं. एक्स वाई जी के एक आंसर होगा हाफ कॉमा 1 कॉमा 1. दिस इज वन आंसर. द अदर आंसर इज गोइंग टू बी 200 कॉमा 100 कॉमा 100. So these are your answers, right? Let's move to the next problem. Log base 9p is equal to log base 12q is equal to log base 16p plus q. You have to find p by q. ठीक है? So let's try to solve this question. log base 9p सबको बराबर मान लो k के. किसके बराबर मान लो? k के. तो log base 9p क्या हो जाएगा? p हो जाएगा 9 to the power k. q क्या हो जाएगा? 12 to the power k.
और p प्लस क्यू क्या हो जाएगा 16 टू द पावर k, राइट। अब मैं ये एक इक्वेशन हो गया मेरे पास, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ 9 टू द पावर k प्लस 12 टू द पावर k इज इक्वल टू 16 टू द पावर k, राइट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, पूरे को 16 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 9 बाई 16 टू द पावर k प्लस 12 बाई 16 टू द पावर k इक्वल्स 1। ये क्या बन गया, ये बन गया 3 बाई 4 टू द पावर 2k, है ना, स्क्वायर ऊपर चला गया। और ये बन गया 4 3 3 by 4 to the power k equals 1. So it is an easy problem now. 3 to the power 4, 3 by 4 to the power k can we replace as y. मैंने क्या कह दिया इसको y, तो ये इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स 1। सो y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल 0। सो y क्या हो गया, y हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 बाई 2। तो एक हो गया -1 प्लस रूट 5 बाई 2 और एक हो गया -1 माइनस रूट 5 बाई 2। y क्या है, y है 3 बाई 4 टू द पावर k इक्वल्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और 3 बाई 4 टू द पावर k इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5 बाई 2। नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। So what you got 3 by 4 to the power k is equal to root 5 minus 1 by 2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है p by q, p by q, p क्या है, p है 9 to the power k और q है 12 to the power k, 9 to the power k and 12 to the power k which is nothing but 3 by 4 to the power k. This is nothing but 3 to the power 4 to the power k. So p by q क्या है 3 to the power, तो ये दोनों से क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है p by q equals रूट 5 माइनस 1 by 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। How many questions left? 1 2 3, 1 2 questions are left. Let's see. I'll leave the rest question as your assignment or homework. Let's see the question. X to the power 2 log x cube plus 2 log x square plus 1 is equal to 2 to the power 11 log x square by 4। बेस 2 है तो सबसे पहले इस इतना कॉम्प्लेक्स को आराम से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लॉग बेस 2x को क्या लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं a। तो x टू द पावर 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 द पावर 11a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 द पावर 11a स्क्वायर माइनस 2, राइट। So I got x to the power 2a cube plus a square plus 1 equals 2 to the power 11a square minus 2. I can take log base 2 on the both side. Taking log base 2 both side, I'll get 2a cube plus a square plus 1 into log base 2x is equal to 11a square minus 2। and what is log base 2x, that is a। so इसको मैंने लिख दिया 2a cube plus a square plus 1 into a is equal to 11a square minus 2। तो क्या इक्वेशन बन गया, लेट्स राइट इट। तो बन गया 2a to the power 4 plus a cube plus a equals 11a square minus 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, लेट्स सॉल्व, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। 2a to the power 4 plus a cube minus 11 square plus a plus 2। oh, 4 degree, but you have a good news because coefficient of highest degree and the constant is same, constant coefficient of your cube and the curve,
सो हमने ये ऑलरेडी कर रखा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी इसको डिस्कस किया था। तो हमें क्या करना चाहिए, ए स्क्वायर से डिवाइड कर देना चाहिए। सो क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ये और ये एक साथ क्लब होके क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बाई ए, ये अकेला -11। ए प्लस 1 बाई ए को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया वाई। तो क्या बन गया, 2 इंटू वाई स्क्वायर -2, दैट इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस ए 1 बाई ए का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, so a square plus 1 by a square plus 2 is equal to y square, so that's y square minus 2 plus y minus 11, right? सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सब सही है। तो क्या हो गया, ये बन गया 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 11 इक्वल 0। so 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 15 इक्वल 0। y क्या हो गया, y हो गया -1 प्लस माइनस b स्क्वायर इज 1 प्लस 120 by 4, that makes it -1 plus minus 11 by 4, that makes it -3 or 10 by 4, right? तो so a plus 1 by a equals -3 or a plus 1 by a equals 10 by 4. Now if I try to solve this, it will be a square plus 3a plus 1 equals 0, and this would be a square, let's multiply it, a square plus 1 is equal to 10a by 4, so it will be a 4a square minus 10a plus 4 equals 0, right? ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर 100 माइनस 64 बाई 8। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस √5 बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 प्लस माइनस 6 by 8, which makes it 2 or half. 2 or half. Now the question is, find the product of real values of x. अगर मान लो आपको चार प्रोडक्ट्स हैं, x1, x2, x3, x4, राइट? सिंस चारों ए के रियल वैल्यूज आ गए तो x1, x2, x3 रियल होंगे। आपको इसका प्रोडक्ट चाहिए, इज इक्वल टू पी है, राइट? अगर मैं चारों का लॉग ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 इज इक्वल टू log p। बेस मैंने मान लिया सबका 2, क्योंकि log हमने अज्यूम क्या किया, log बेस 2x इज 1। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया log बेस 2p। और आपको पता है कि जो आपके चार आंसर आए हैं यहाँ पे a1, a2, a3, a4, ये चार ये आंसर है आपके, a1, a2, ये है a3, a4, राइट? तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 क्या है, इज इक्वल टू log बेस 2p। तो आप या तो इसको सीधे ऐड कर दो इन दोनों को, या आप सीधे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चलो ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं देखूं -3 प्लस √5 बाई 2 प्लस -3 माइनस √5 बाई 2 प्लस 2 प्लस हाफ, या तो मैं सीधे यहां से भी ले लग सकता था -3 एंड 10, दैट इज गोइंग टू बी -3 एंड 10 बाई 4। -3 एंड 10 बाई 4 क्या होगा, हाफ। -3 एंड 10 बाई 4 इज माइनस हाफ। देखिए क्या आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज -3 प्लस 2.5 इज इक्वल टू log p बेस 2।
तो क्या क्या हो गया, ये हो गया माइनस हाफ इज इक्वल टू लॉग बेस 2p। तो p क्या हो गया, 2 to the power -12। सो p क्या है, एक्सक्यूज मी, तो p क्या हो गया, p हो गया 1/√2। सो दिस इज योर आंसर। यू डोंट एक्चुअली हैव टू फाइंड x1 x2 x3, आपने a1 a2 a3 a4 ऑलरेडी निकाल लिया है। इनफैक्ट आपको a1 a2 a3 4 भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर से देखें, आपने बस चेक कर लिया कि हाँ ये मेरा रियल वैल्यूज आ रहा है, तो आप यहां से सीधे काम कर सकते हैं। कहां से, यहां से देखिए, मैं ये नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ सो दैट आपको सॉल्यूशन जब मैं भेजूँ तो देखिए यहाँ से, अगर मैं ये वाला पार्ट भी हटा दूँ तो ये करने की जरूरत नहीं थी, इतने कैलकुलेशंस, ये आपको जरूरत निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से आपको तुरंत साफ दिख गया कि आपका ये क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कह सकते हो a1 प्लस a2 क्या है, आप कह सकते हो -3। यहाँ से आप कह सकते हो a3 प्लस a4 क्या है, 10/4। तो आप कह सकते हो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 क्या है, -3 प्लस 10/4 विच इज गोइंग टू बी -हाफ। ठीक है, और लेट से अगर मैं पूरी कहानी यहीं से सॉल्व कर दूं कि भैया ये जो 4 डिग्री आया है, तो यहाँ पे भी आप अगर, लेकिन एट द सेम टाइम आप इतना ज्यादा जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी लाना चाहिए होगा कि रूट सारे पॉजिटिव है, रूट सारे रियल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप तुरंत कह सकते हो, देखिए यहीं से आप कह सकते थे ए क्यूब क्या है, माइनस ए क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, -b/a सम ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ से भी आप कह सकते थे 2 to the power -हाफ। तो इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस जो आपको इतना चीज जो है, बट एट द सेम टाइम गेस आपको बहुत जरूरी करना होता है कि भैया वो जो आप कर रहे हो वो जस्टिफाइड है कि नहीं। आइए देखते हैं इसको कैसे हैंडल करें। यहाँ पे देखिए ट्रिकी है, यहाँ पे है 1 + x⁴/3/2 और यहाँ पे 3 to the power log base 2x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴log base 2 2 to the power 3/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने 3/2 को इस तरीके से लिख दिया, और ये है 3/log base 2x। सिंस यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो क्यों ना मैं इंटर कन्वर्ट मार दूं। तो इंटर कन्वर्ट अगर मारूंगा तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 1 + 2 to the power 3/2 log 2x, है ना, जो प्रॉपर्टी आज हमने डिस्कस किया था। और ये क्या हो गया, 3 log 2x। अब 3 log 2x को आप क्या कह लो, आप 3 log 2x को कह लो y। तो ये क्या हो गया, 1 + 2 to the power 3/2 y इज इक्वल टू 3 to the power y। अब देखो हो क्या रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, 3 to the power y माइनस 2 √2 to the power y इक्वल्स 1, है ना। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, 2-3 तरीका होता है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बेसिकली हिट एंड ट्रायल पे ही आप सोच सकते हो कि y = 2 फिट इन बैठ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये √8 है, √8 का स्क्वायर 8 होगा। या आप ऐसे भी सोचते हो sec² माइनस tan² के फॉर्म में भी सोच सकते हो, कि अगर आप कोई ट्रायंगल इमेजिन करो जिसका sec अगर 3 है और tan क्या होगा, 2√2। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप लगा सकते हो कि sec² माइनस tan² इक्वल्स 1। तो थीटा पावर क्या होगा, y। तो आप यहां से कह सकते हो y इक्वल्स 2। क्वेश्चन y का सब्स्टिट्यूशन क्या है, log 2x। तो log 2x को आप क्या कहोगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये हिट एंड ट्रायल का है, हो सकता है आप गेस ना कर सको, बट दैट्स ओके। हम जब तक क्या कहते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हमें हिट लेने का भी कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा। तो log base 2x क्या आ गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। सो x क्या हो गया, 2² 4। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज इट द लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Since we are running out of time, so I'll leave this question and
this question as assignment. Just solve this question 22. Next class will begin with these two question. Question number 22 and question number 23. These two questions are your assignment, है ना? Just do that. Already हमने आज काफी questions कर लिए हैं. 1.5 घंटे का सेशन हो गया है और सारे टाइम मैं क्वेश्चन ही करता रहा हूँ, तो इट्स लाइक आपको कंज्यूम करने में टाइम लगेगा. इट विल टेक अराउंड 2 आवर 2.5 आवर टू कंज्यूम ऑल द आइडिया. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने से आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है. सो लेट्स मीट वेरी सून अगेन. एट द सेम टाइम रेगुलर क्लासेस हमारी चलती रहेगी और ये आपका पैरेलली प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो कि मेंस और एडवांस को फोकस करता हुआ बढ़ता रहेगा. ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर.